So what are we saying? The oxidation reactions, they are also known as dehydrogenation reactions, and both the bonds, यहाँ से hydrogen और यहाँ से OH bond, both they are going to break. When we are doing the oxidation reactions, you have to remember, number one, primary alcohols give aldehydes. Primary alcohols, they give aldehydes. Oxidizing agents जो हम इसमें use करेंगे, there are many. The first one which we can use is acidified potassium dichromate, Kr2Cr2O7. ठीक है. Second oxidizing agent we are going to use chromium trioxide. Third oxidizing agent we can use is Poland's reagent. Poland's reagent. Poland's reagent is chromium trioxide in presence of pyridine. ठीक है. और फिर उसके बाद फोर्थ रिएजेंट जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? पीसीसी. राइट? पीसीसी क्या है? पीसीसी इज pyridinium chlorochromate. pyridinium chlorochromate. ठीक है. और पीडीसी भी यूज करते हैं, pyridinium dichromate. pyridinium chlorochromate, pyridinium dichromate. जो acidified K2Cr2O7 हम यूज कर रहे हैं फॉर द ऑक्सीडेशन, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करें रिएक्शन, जैसे हम CH3 CH2OH से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर फॉर ऑक्सीडेशन वी आर यूजिंग K2Cr2O7, right? Then in this case the reaction will first produce aldehyde, और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है. फर्दर ऑक्सीडेशन aldehyde की एसिड देते हैं, because K2Cr2O7 is a very strong oxidizing agent. तो जब हम K2Cr2O7 यूज करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड है. अगर हमको रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करनी है, एल्डिहाइड पे स्टॉप करनी है, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या हम CrO3 यूज करेंगे, या हम पोलैंड्स रिएजेंट यूज करेंगे. सो व्हेन वी आर यूजिंग पोलैंड्स रिएजेंट और chromium trioxide, the product is going to be an aldehyde. ठीक है. सिमिलरली अगर हम PCC यूज कर रहे हैं, तो PCC में भी aldehyde पे ही रिएक्शन स्टॉप होती है. Suppose we are taking this compound. This is but2E1O. Okay. अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं pyridinium chlorochromate की प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है दैट इज अनटच्ड, which very clearly shows कि PCC भी क्या है? It's a mild oxidizing agent. तो वापस ये क्या आ जाएगा? We will get CH3 double bond untouched और CHO. We are getting an aldehyde, right? So primary alcohols जो हैं they are going to give aldehydes. Secondary alcohols ketones देते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स देते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो अगेन हम लोग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्रास्टिक कंडीशंस में करेंगे तो फिर से एसिड आएगा.
प्रोपेन टू ओल, ठीक है, in presence of CrO3 then it is going to give us a ketone. क्लियर हो गया? ओके, अब अगर ड्रास्टिक कंडीशंस में हम यूज करें, मतलब कि यहाँ पे CrO3 की जगह हम K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं, तो in that case also we will get a ketone but with an acid with lesser number of hydrogens. Lesser number of hydrogens का मतलब क्या हुआ? कार्बन. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन CrO3 की बजाय K2Cr2O7 के साथ कर रहे हैं, राइट? सो हमको यहाँ पे एक एसिड मिलेगा, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एसिड they are going to be less than the starting reactant. So step down reaction हो जाती है, ठीक है? बट अदरवाइज अगर हमें कीटोन ही चाहिए तो हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, which is what? CrO3. ओके, जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स हमें क्या देते हैं? It gives us alkenes. Why this is happening? कि प्राइमरी एल्डिहाइड दे रहा है, सेकेंडरी कीटोन दे रहा है, पर टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती. The tertiary alcohol does not undergo oxidation because उसके पास ये वाला हाइड्रोजन नहीं है. We can see that the cleavage over here is taking place from here to give us an aldehyde or a ketone, but tertiary will not have this hydrogen over here. This kind of a cleavage cannot take place. Therefore, tertiary की जब भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, it is not possible. हम जब भी उसको रिएक्ट करते हैं in presence of oxygen, it will always give us an elimination reaction. ठीक है? So third हम कर रहे हैं अब tertiary alcohol. Tertiary alcohol is ठीक है? So जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, it is going to give us an alkene. It is going to give us an alkene. ठीक है? Is it clear? Alright. पर अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करें, लाइक हम K2Cr2O7 यूज करें, तो इट माइट गिव अस अ कीटोन, बट वो जो कीटोन इसमें बनेगा that will have lesser number of carbon atoms. तो अगर यही रिएक्शन हम करते हैं in presence of K2Cr2O7, it is going to give us a ketone plus carbon dioxide plus water. Right? Now over here we are using all oxidizing agents, but this reaction can also be carried out जैसे कि हम यहाँ पे dehydrogenation reaction बोल रहे हैं. तो dehydrogenation reaction जो है वो कॉपर की प्रेजेंस में भी हो सकती है. तो हम dehydrogenation reaction in particular देखते हैं कि क्या होती है. dehydrogenation का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? सो dehydrogenation reaction देखते हैं.
ओके, सो व्हेन वी लुकिंग एट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हम देखेंगे कि हम सेम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और हम सेम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले, ठीक है, हम इसको कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं at 573 Kelvin, right? When we are going to get an aldehyde, CH3CHO. If the same reaction कीटोन इसके साथ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ की जाए, सेम कॉपर 573 केल्विन पे, तो ये हमें कीटोन दे देता है, डबल बॉन्ड O, राइट। और अगर यही रिएक्शन हम टर्शरी के साथ करें, तो प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन आएगा। एंड CH3, राइट। सो आप देख रहे हो इन ऑल द थ्री केसेस क्या कर रहे हैं हम, कॉपर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी हम सेम रख रहे हैं 573 केल्विन पे, पर जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर। व्हाई दिस इज हैपनिंग, देखो यहाँ पे जब आप देख रहे हो CH3 CH2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ब्रेक हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, CHO, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे भी एक CH बॉन्ड है, सो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, रिजल्ट क्या रहेगा, ओनली वन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो। बट इन दिस केस जब हम देख रहे हैं देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट इस वाले कार्बन के साथ कहीं पे भी, सो इधर हमारा ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, पूरा OH ग्रुप दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, ठीक है। अब एक हमारे पास होता है बहुत ही कॉमन अल्कोहल which is known as ethyl alcohol. Okay, this is used for what? For drinking purposes. As a beverage use करते हैं इसको ethyl alcohol को। एक और अल्कोहल होती है मिथाइल अल्कोहल, राइट। अब बोलते हैं कि मिथाइल अल्कोहल जो है that is not good for health, right? Sometimes what happens, जब ethyl alcohol की preparation की जाती है for laboratory purposes, तो उसमें हम थोड़ी सी मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, and that is known as denatured alcohol. Denatured alcohol. So denatured alcohol is what? Both of these. Ethyl alcohol plus CH3OH. When this denatured alcohol is consumed by anyone, it causes death. क्यों कॉज करती है ये डेथ? ऐसा देखा जाता है कि बॉडी के अंदर मिथाइल ऑक्सीडेशन होगी ना, जैसे ही हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमेशा मिथाइल अल्कोहल जल्दी ऑक्सीडाइज होता है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, राइट। और ये जो मिथाइल अल्कोहल है वो किस चीज में ऑक्सीडाइज होगा? CH3OH जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा मीथेनॉल, HCHO। ये जो मीथेनॉल होता है ये इमीडिएटली नर्वस सिस्टम को हिट करता है बिकॉज इट इज पॉइजनस, और ये कॉज करता है ब्लाइंडनेस। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ, ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमेशा अब यहाँ आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन हम कह रहे हैं लोअर मेंबर की ज्यादा इजीली हो रही है देन हायर मेंबर।
उलट होती चली जाएगी ड्यू टू द बल्कियर ग्रुप जो कि उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ alcohols. Go on to the chemical properties of phenols. फिनोल्स में हम तीन तरह के रिएक्शंस स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। ओके, एसिडिक नेचर हमने अल्कोहल्स की भी स्टडी करी थी। तो एसिडिक नेचर इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन। जब हम फिनोल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है फिनोल का। ओके, यहां पे जो ये वाला कार्बन एटम हम देख रहे हैं, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। राइट, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमको ये पता है जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है? 33% और p कैरेक्टर 67%। तो इसलिए दिस कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये वाला कार्बन एटम, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये OH की पोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on oxygen atom decreases। अगर ये डिक्रीज हो जाएगी, the polarity of OH bond increases। ठीक है, अब अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा। Therefore hydrogen is easily released. Hydrogen is easily released. As a result of the acidic nature of phenols सोडियम के साथ react करना चाहिए to give hydrogen। यही रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। तो ये जो यहाँ पे बना, दिस इज व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। हमें पता है मेटल्स के साथ जब हम एसिड को रिलीज करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होता है तो वो हमेशा क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट although phenol is acidic, it is less acidic than carboxylic acid
Therefore, it does not react with sodium carbonate and sodium bicarbonate. So कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम है, बट जब हम अल्कोहल के साथ करते हैं कंपेयर तो हम बोलते हैं कि फिनोल इज more acidic than alcohol. Phenol is more acidic than alcohol. One reason हमने already दे दिया कि जो alcohol होता है उसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब less electronegativity. Less electronegativity का मतलब electron density on oxygen is going to be more. और अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी क्या होगी? कम। और अगर पोलैरिटी कम है तो हाइड्रोजन बहुत इजीली रिलीज नहीं हो सकता। सो फर्स्ट रीजन वी कैन गिव इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम in phenol sp3 hybridized carbon atom in alcohol. Reason मैंने explain कर दिया कि sp2 hybridized is more electronegative, less electron density on more electron density on oxygen, less polarity and difficult release of hydrogen. ठीक है। Second जो इसका reason है that is stabilization of the phenoxide ion by resonance. This is the first reason. ये question important है, why phenol is more acidic than alcohol. So दो रीजंस देने पड़ेंगे हमें, ठीक है। सो सेकेंड रीजन इसमें क्या आ जाएगा? That the phenoxide ion is resonantly stabilized या stabilized due to resonance. अब होता क्या है कि जब भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे हम फिनोल की, फिनोल ब्रेक्स डाउन इनटू फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो रिएक्शन हमको नजर आ रही है दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वो एसिडिक होगी। जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन रहा है ये रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड है। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम। नेगेटिव चार्ज, यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा इधर, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, राइट। फिर ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ठीक है।
नेगेटिव चार्ज यहाँ नीचे आ गया। नेक्स्ट पे ठीक है, और फिर वापस with a negative charge on oxygen. ओके, अब अगर आप इसके सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है जो कि डिस्पर्स हो रहा है पूरे में, ये इसको ज्यादा स्टेबल करता है। There is no positive charge you can see on any of the resonating structures. अगर पॉजिटिव चार्ज भी होता तो वो लेस स्टेबल होता, जैसे कि हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अल्कोहल के ड्रॉ करते हैं तो अल्कोहल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट। So when alcohol के देखो resonating structures, alcohol के resonate भी stabilized है, ठीक है। अब ये यहां आ जाएगा। So first structure क्या बना, positive charge on this oxygen comes, ठीक है। जब भी 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर 4 से ज्यादा होंगे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ फेनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज आया, राइट। सो अब यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है। फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, राइट। Okay, now because of the positive charge, as I just told you, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फिनोल है वो वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। तो एवरी सिस्टम वांट्स टू गो टू अ मोर स्टेबल फॉर्म, तो इसलिए इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इजीली होती है। फिनॉक्साइड आयन बनता है और H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। पर जब हम अल्कोहल्स देख रहे हैं, so alcohols they break up into alkoxide ion plus H positive। जो alkoxide ion है उसमें कुछ भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए उसकी जो स्टेबिलिटी है that is going to be less। So second reason हम क्या देंगे कि as the stability of the alkoxide ion is less than the phenoxide ion, stability of the alkoxide ion is less than the phenoxide ion, therefore in case of phenols, the tendency to form phenoxide ion increases, thus releasing H positive
more easily. More easily, making phenols more acidic than alcohols. So ये आपका complete answer है अगर question आ जाता है कि why phenols are more acidic than alcohols. ठीक है, clear हो गया? So ये इसकी हमने first reaction करी. Second reaction जो हम करेंगे इसकी, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखनी है आपने कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो, साइनो, क्लोरो, ये इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं, हेल्प करते हैं इस पूरे नेगेटिव। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा ना एल्केन्स में कि NO2 का क्या इफेक्ट होता है ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो उसी तरह से ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा एंड इट विल एनहांस एसिडिक स्ट्रेंथ। It will enhance acidic strength. Whereas electron donating groups like methyl group या alkyl group, amine, और alkoxy, alkyl, amine or alkoxy decrease the acidic strength. ठीक है, it decreases the acidic strength. So ये first reaction थी. Second reaction is action with zinc. रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक के साथ जब हम हीट करते हैं फिनोल को तो वो बेंजीन दे देता है। बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमीन्स दे देगा, एनिलिन, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में at 675 Kelvin when we will get aniline. ठीक है, reaction with ammonia. Then the next reaction is an important reaction, that is action with acid chlorides. With acid chlorides.
एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये हमें एसीटेट दे देता है। CH3COCl OCOCH3 लास्ट में HCl। बिकॉज यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए हम इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं, नॉट फ्रीडल-क्राफ्ट, एसिटाइलेशन रिएक्शन, राइट। और वो जो ऊपर बना है उसको हम क्या बुलाएंगे, फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट। अगर यही रिएक्शन हम सैलिसिलिक एसिड के साथ करें, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, OH COOH, this is salicylic acid, यही रिएक्शन अगर हम करते हैं CH3COCl के साथ भी कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए ये दो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं, या हम ये ले सकते हैं, या हम एसिटिक एनहाइड्राइड इज दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, सो हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाती है, which is known as aspirin, एनर्जेसिक की तरह जिसको हम लोग यूज करते हैं, डिस्प्रीन और ये सब चीजें, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बुलाते हैं इसको हम, एस्पिरिन इज नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एस्पिरिन। उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं अगर हम फ्रीज रीअरेंजमेंट करें। फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है, लेट्स सी। फोर्थ वाली हेडिंग के नीचे ये सारे रिएक्शंस हम कर रहे हैं। अगर बाय चांस मान का क्वेश्चन आपको आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीज रीअरेंजमेंट, ओके। तो इसमें जो एसिटाइल ग्रुप है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। जैसे आपके पास है OCOCH3 फिनाइल एसिटेट, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं विद AlCl3 और हम इसे हीट कर देते हैं। तो रीअरेंजमेंट इसका होके ये दे देता है हमें, दिस इज नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, कीटोन बन जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, ठीक है। फिर एक इसमें नेम रिएक्शन भी है, फिफ्थ दे दो इसको आप, शॉर्टन-बॉम्बेन रिएक्शन। शॉर्टन-बॉम्बेन रिएक्शन, शॉर्टन-बॉम्बेन रिएक्शन में हम यहाँ पे जैसे हम इधर
इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। C6H5COCl के साथ जब हमारे पास बेंजोएट बन जाता है, फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। दिस इज अ फिफ्थ रिएक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? एनी प्रॉब्लम? सो ये सारे रिएक्शंस पे हम लोग मेजरली यहां से क्लीवेज कर रहे हैं। ओके, जितनी भी हमने रिएक्शंस करी है वहां पे क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द O and the H. The next kind of B kind of reactions are reactions of the benzene ring, electrophilic substitution reactions. Reactions of the benzene ring, electrophilic substitution reaction, right? जब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे तो हमने देखा कि सारे के जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है। सो इसलिए हम कहते हैं कि OH ग्रुप जो है दैट इज व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द resonating structures. Ortho para directing according to the resonating structures. The negative charge is on the ortho and para positions. Therefore इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें करेंगे दैट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन दो तरह से ब्रोमिनेशन इसमें होती है। फर्स्ट, in aqueous conditions, that is reaction with bromine water. जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है OH प्लस 3Br2 to give us 2,4,6 tribromophenol. ओके, पर अगर यही कंडीशंस हम एक्वस ना लेके the reaction takes place in presence of carbon disulfide, तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल का। in presence of CS2
नाइट्रोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी दो तरह से होती है। फर्स्ट, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लें तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होगी and we will get 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol, इसे पिक्रिक एसिड भी बुलाते हैं। ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन डाइल्यूट के साथ करेंगे तो ये हमें क्या देगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। A mixture of ortho and para. इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हम इन दोनों को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो पैरा वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जब हम डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले डिस्टिल होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में डिस्टिल होता है। ठीक है। सो सिंपल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज Friedel-Crafts alkylation reaction. Third reaction, Friedel-Crafts alkylation reaction जो है that is introduction of an alkyl group. Okay, introduction of an alkyl group in presence of a halogen carrier. So we get 2-hydroxytoluene या ortho-hydroxytoluene and para. ठीक है। और इसे बुलाते हैं क्या हम? कॉमन नेम क्या है इसका? ऑर्थो
ऑर्थोप्रिसोल एंड पैराप्रिसोल, ऑर्थोप्रिसोल एंड पैराप्रिसोल। ठीक है, उसी तरह से लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन विद H2SO4। ये वाली रिएक्शन हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करते हैं to give two different products। फर्स्ट टेम्परेचर जो हमने रखना है दैट इज 288 to 293 केल्विन। राइट, जब हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। ओके, सो 288 पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर यही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे, हम टेम्परेचर दे रहे हैं 373 केल्विन, दोनों रिएक्शंस H2SO4 के प्रेजेंस में ही होगी, तो यहां पे हमारे पास पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो आज हम यही करेंगे। ओके।